Hello and welcome everyone. Welcome to episode number 9 of CA Final Direct Tax MCQ Solution Lectures. I hope you guys are doing good. और मैं तो हमेशा मस्त ही रहता हूँ. Yes, I do agree. Last 3-4 दिन से I was not able to do this recording and keep the lecture because I was occupied. Ongoing batch had to be completed. May 21 का one batch is over. November 20 as of now I am not keeping any further batch because of the uncertainty around everything. And again from next week my May 21, November 21 one more batch is starting online live, so you can interact with me. Details about that I will give you further, but because of that I was a little occupied. So let's continue now. We are in episode number 9. We have last time completed I think till our chapter tonnage tax scheme, correct? Okay, so let's start with the next chapter. We are now still in the order of the textbook. This is page number 81, chapter number 25, penalties chapter. Penalties chapter will get over in today's episode. Miscellaneous provisions will get over, and इसके बाद में TDS has got 125 questions. So we will be probably able to finish one part of TDS and second part will continue in episode number 10. So as of now my plan is that the episode 10 will happen immediately. Immediately means very soon. It may happen on the same day, it may happen on the very next day without any gap. That's the plan currently. So I suggest that you should watch very quickly. You should finish till the first part so that you can continue with episode number 10. Chaliye फटाफट we will come to page number 81, question number 1. Penalties ka chapter. Whenever you have committed any crime, then there is going to be penalty. This was like objective question even before MCQs. So they used to ask, not replied to 142.1 notice, तो क्या penalty होगा? 10,000 rupees. If you remember, it is like an objective question. Not getting a tax audit done, 0.5% of the turnover or 1,50,000, whichever is lower. Books of accounts नहीं maintain किया तो 25,000 penalty. Under reporting का misreporting का penalty. Under reporting 50% of the under reported tax, misreporting 200% of the under reported tax. These are questions जो आपको solve करना चाहिए without option also. Without option you should be able to solve them. Options are only an advantage. Obviously when we do this chapter it will serve as a little bit revision also. जो by now everybody has observed कि हर chapter थोड़ा थोड़ा उसके लिए MCQ का question is as good as revision of the chapter also. तो चलिए question number 1. What will be the penalty for non-furnishing of report beyond 1 month by any reporting entity which is obligated to furnish country by country report under section 286? CBC report, uniform transfer pricing documentation, has to be furnished. If you furnish late, then first 1 month it is going to be 5,000 rupees per day, but after 1 month it is going to be 15,000 rupees per day. And अगर assessment order आ गया तो उसके बाद में it becomes 50,000. So they are asking you after 1 month, and after 1 month it is 15,000 rupees per day penalty. First month 1 month 5,000, next after that 15,000, and after order is passed 50,000. Where there is under reporting of income which leads to misreporting of income, the penalty will be dash %. If it is only under reporting it will be 50, but if it is misreporting 200%. On failure to keep, retain or maintain books of accounts, documents etc. required under section 44AA. Failure to maintain books of accounts, flat penalty of rupees 25,000. Question 4. What will be the penalty for failure to get account or obtain audit report under section 44AB? So books of accounts flat 25, but tax audit we discussed that 0.5% of turnover or 1,50,000, whichever is lower. So search for it. 0.5% is given खाली ये दो के अंदर, इसमें 150 is given in C. So 0.5% of turnover or 1,50,000, whichever is lower, that is your option C. Question 5. What will be the penalty where Mr. Jitendra failed to comply with a notice under section 142.1, 142.1, 142.2A and 143.2 scrutiny notice also? In all the cases penalty is going to be 10,000 rupees for every default. What will be the penalty for submission of inaccurate information in your country by country report? See, whenever you furnish late information, that's 5,000, 15,000 or 50,000 rupees per day. But when you furnish inaccurate, wrong information, the penalty is going to be massive. For wrong information in CBC report, you have to pay a penalty of rupees
5 lakh rupees. Question number 7. Which of the following cases are not included within the scope of underreported income? Not included in underreported income. That means 270A not applicable. Amount of income in respect of which assessee offers explanation. Absolutely right. If he is offering explanation and assessing officer is satisfied about the explanation, then not applicable. Where the amount of income determined on the basis of estimate and income tax authority is satisfied that the books of accounts are correct and complete. इसको बोलते हैं intangible addition. अगर आपके AO ने intangible addition किया है but your books of accounts are correct and complete, then again penalty is not applicable. So A and B दोनों right है. अगर दोनों right है तो वैसे तो आंसर D होना चाहिए, but we should read C also once. Amount of undisclosed income on account of search operation where penalties, obviously search का penalty इस सेक्शन में लगता है and therefore ये under reporting में नहीं आता है and consequently all of the above will not be included under your under reported income. Question 8. In cases where return of income has been filed, which of the following situations will be considered as under reporting? Return file किया होगा, then what will be under reporting? See, there is one case where you don't file return and income is more than basic exemption. Return is filed, income, return is not filed, income more than basic exemption. But here return is filed. Return file होता है तब there are totally 3 cases. What are the total 3 cases? Case 1, where your assessed income is more than income in intimation. ROI irrelevant. ROI irrelevant. Intimation का income से अगर आपका assessed income ज्यादा हुआ तो assessed income more than intimation वाला income. That is one case. Reassessed income more than assessed income. Second case, and if you show more loss than you are eligible. Correct? चलिए देखते हैं. When income assessed is greater than income determined in the return processed under 143(1). That's absolutely right, but we have to check the other options also. Income assessed is greater than basic exemption. That is when return is not filed. This point applies where return is not filed. और यहाँ पे पूछा क्या है? Return is filed. तो ये आंसर नहीं हो सकता. Where income assessed is greater than chapter 6 से deduction, that is irrelevant. When income assessed is greater than 5 lakh, ऐसा कोई numerical limit नहीं है. Accordingly, this only is the correct answer. तो देखिए आंसर हम लोग डायरेक्टली लिख भी सकते थे, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर्स इज दैट वी हैव टू डिस्कस द आंसर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली लेट्स गो अहेड. क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following things is an assessee required to do for making an application to AO for grant of immunity from imposition of penalty? If you want immunity from penalty, what are the conditions? You have to pay the tax and the interest. You will not appeal against the assessment order, that is a condition, and it should not be a case of misreporting. Misreporting में आपको वेवर नहीं मिलता है, only under reporting में मिलता है. वो भी टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एंड ऑन द कंडीशन दैट सर आई विल नॉट अपील अगेंस्ट द असेसमेंट. आपने जो असेसमेंट किया वो फाइनल है, उसके अगेंस्ट में अपील नहीं करूंगा. लेट्स सी. पे द टैक्स इंटरेस्ट पेएबल एज पर द ऑर्डर, यस. डज नॉट प्रिफर एन अपील अगेंस्ट द असेसमेंट ऑर्डर और द रीअसेसमेंट ऑर्डर, यस. Therefore both A and B is right and none of the above cannot be the answer, both A and B. Question number 10. Penalty proceedings under section 270A has been initiated due to claim of expenditure not substantiated by evidence. Expenditure without evidence, this becomes misreporting. अगर misreporting है, then whether the immunity can be granted. In this case immunity cannot be granted because immunity cannot be granted in cases of misreporting. Misreporting वाले cases में immunity grant नहीं हो सकता. It is only possible in cases of underreporting. Understood? So no. Question 11. Mr. Ram, a resident individual aged 65 years, has not furnished his return of income for AY 2021. However, the total income assessed with respect to such year, obviously return file नहीं किया तो best judgment होगा 144 के अंदर 12 लाख रुपीस. What will be the penalty leviable for? Clearly बोला है under reporting. In under reporting can I say this is 50% of the tax? misreporting होता ना, misreporting तो 200% होता, लेकिन ये under reporting है. तो उसके लिए सबसे पहले sum based question we will have to do it properly. तभी तो पर्पस सर्व होगा ये लेक्चर्स का. Okay, this is my ongoing lecture. MCQ का लेक्चर का सेक्शन इज सेपरेट. ओके, लेक्चर नंबर 9 है ना? 9 है ना? अरे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है कभी कभी. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है. क्वेश्चन 11. व्हाट इज द इनकम गिवन टू अस? 12 लाख रुपीस. सबसे पहले डू यू अंडरस्टैंड
कि वी हैव टू फाइंड आउट द अंडर रिपोर्टेड टैक्स, बिकॉज उस टैक्स के ऊपर पेनल्टी लगेगा। तो करिए, टैक्स कैलकुलेशन कीजिए। 12 लाख के ऊपर 2 लाख का 30% बिकॉज द एक्सेस ओवर 10 लाख प्लस 1,12,500। नो 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 नो, resident 65 years, basic exemption will be rupees 3 lakh, and therefore plus 1,10,000 will be the tax up to rupees 10 lakh। 10 lakh तक normal individual 1,12,500, senior citizen 1,10,000 and very senior citizen 1 lakh rupees होता है। accordingly how much are you getting? I think this is 1,70,000, but मित्रों this is basic tax। सरचार्ज नहीं आएगा लेस देन 50 लाख, रिबेट नहीं आएगा मोर देन 5 लाख, लेकिन एचईसी तो आएगा ना। 1,70,000 किधर गया कैलकुलेटर? 1,70,000 प्लस 4% 176,800, ये टैक्स है रे, टैक्स है। अगर हमने अंडर रिपोर्टिंग किया है तो इसका 50% दैट इज डिवाइड बाय 2, 88,400। अगर ये मिस रिपोर्टिंग होता ना तो 200% होता, 200%। तो उसका पेनल्टी कुछ 353 समथिंग, बट इररिलेवेंट बिकॉज क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू अबाउट अंडर रिपोर्टिंग। 88,400 किधर दिया? 88,400 इन ऑप्शन बी। एंड नाउ लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, इफ हिज एज डज नॉट क्लिक टू यू एंड यू टेक 1,12,500 हियर, अगर आपने एज का ध्यान नहीं दिया एंड नॉर्मल 250 का बेसिक एग्जेम्पशन दिया, देन दिस विल बिकम 172,500 प्लस 4%, 179,400 आपका टैक्स आता। 179,400 दिखता है? नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, अपने कैलकुलेटर पे कर लो, अपने कैलकुलेटर खर्चा किया करो, कभी कभी खर्चा भी किया करो। डिवाइड बाय 2, 89,700 is one of the wrong options out here. What I am trying to make you understand, my dear students, is that अगर आपने एज का ध्यान नहीं दिया, then you will end up selecting this, and here then in MCQ you cannot get stepwise marking obviously। 88,400 is the only correct answer। चलिए question 12, what is the penalty under 271 FA for not submitting SOFT? SOFT का पेनल्टी कितना है? SOFT का you have to file up to 31st May, 1st June से it will start at 500 rupees per day। अगर नोटिस मिला स्टिल इट विल बी 500 रुपीज पर डे, लेकिन नोटिस में गिवन टाइम एक्सपायर हुआ तो उसके बाद में इट विल बी 1,000 रुपीज पर डे। सो इनिशियली 500 बट आफ्टर नोटिस एक्सपायर्स 1,000 रुपीज पर डे। सो 100 रुपीज पर डे रॉन्ग आंसर, 500 पर डे राइट आंसर, 1,000 पर डे राइट आंसर। सो बोथ बी एंड सी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। व्हाट इज द रेट ऑफ पेनल्टी इफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम is found during search conducted on this date, that is after 2016, and such undisclosed income is not admitted? If you don't admit, then it is going to be 60% of your undisclosed income. Yes or no? Quantum of penalty under 271D and 271E for violation of cash loans chapter 269SS 269T, 100% of the amount taken and 100% of the amount repaid. Raghu Private Bank did not file SOFT. Department sent a notice requiring them to file SOFT till 30th November. So from 1st June it will be 500 till 30th November it will be 500, and Raghu Private Bank filed the same on 19 December. That means 1st December to 19 December it will be 1,000 rupees per day. Penalty under 271 FA for the period from, देखो इतना पूछा है सिर्फ, 1st December to 19 December, 19 days into 1,000 rupees, कैन आई से 19,000 rupees। आपको अगर टोटल पेनल्टी पूछा होता ना तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर का 500 rupees पर डे प्लस दिस 1,000 rupees आफ्टर द नोटिस एक्सपायर्ड। रूल क्या है? 1st जून से 500 rupees पर डे, नोटिस मिला तभी भी 500 पर डे, नोटिस एक्सपायर्ड एंड आफ्टर दैट इट विल बिकम 1,000, एंड दे आर आस्किंग ओनली फॉर दिस पीरियड, सो इट विल बी 19,000 rupees। Question 16. Penalty under section 271 FAA is leviable when SOFT under section 285 BA contains willful wrong information. How much penalty? When you submit your SOFT late, it will be 500 or 1,000. But when you give willful wrong information will attract a penalty of rupees 50,000 flat. Penalty can be reduced or waived under 273A, subsection 1, subsection 4, both non-appealable. The commissioner, or you can say obviously the principal commissioner.
Principal commissioner or commissioner can reduce or waive off the penalty in which of the following conditions? Assessee has made true and full disclosure. Yes, mandatory requirement. Cooperation in any inquiry, absolutely required. Payment of tax and interest, yes please, and that means all of the above. Penalty under 271 AA will be leviable 50,000. Wrong, false information willfully given in SOFT. See, late will be 500 per day and 1000 per day. Late हुआ तो per day penalty. लेकिन wrong information वो भी willful 50,000 rupees. जानबूझ के wrong information दिया. Willful wrong information. 50,000 is the flat penalty. What are the conditions? Inaccuracy is due to failure to comply with due diligence requirement. Yes, because you have not taken care of the right information. Person is aware of the inaccuracy but does not inform. Correct. Person discovers the inaccuracy after furnishing the SFT but fails to inform. देखो अगर आपको बाद में पता चल गया ना, then also you inform. But if you don't do this, then in that case penalty is going to get attracted in all the cases. For the purpose of offenses and prosecution, that means for arresting purposes. वैसे offenses and prosecution is not important, but to answer these few MCQ questions, if you are capable to answer these questions, तो आप offenses and prosecution जेल कितने साल का होता है, it's okay if you don't learn till the time you have answer. जितना हमने MCQ में रखा है उतना आंसर आपको आना चाहिए. तो which of the following individuals will be deemed to be guilty of offense by AOP? AOP में all members नहीं, elder most member नहीं, member who is controlling the affairs, relatives भी नहीं हो सकता, because this is the person under whose control the AOP is, and therefore member who is controlling the affairs has to be responsible. Question 21. Mr. A deducted TDS under section 194J of 12,000 but failed to pay the same to the government. Rigorous punishment for him will be, when you deduct TDS and you don't pay it, you get a rigorous imprisonment of minimum 3 months which can go up to 7 years. Minimum 3 months up to a maximum of 7 years is what will happen अगर आपने TDS का पैसा टाइम पे डिपॉजिट नहीं किया तो. बट एज आई सेड, आप ये ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन जेल वाले इतने भी क्वेश्चंस लर्न कर लोगे तो काफी है. In order to if order made under section 132 with respect to search and seizure is contravened, there will be a rigorous imprisonment up to dash years. अगर आप सर्च के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करते तो 2 years का imprisonment उसमें दिया. So as I said, ये imprisonment के पीरियड आप खाली लर्न कर लो. चलिए. In case of books of accounts taken into custody under search and seizure, which of the following will be presumed? Belong to the assessee, contents are true, sign, handwriting, attestation. Books of accounts belong to the person from whom custody books are found. Correct. Content is true. Correct. Handwriting is of the same person. Correct. And therefore 23 will be D. Question 24. Imposition of fine and launching of prosecution on assessee can be made by. देखिए प्रोसिक्यूशन, फाइन तो एओ भी आपका नोटिस 274 का नोटिस देके पेनल्टी इंपोज करता है, बट प्रोसिक्यूशन कैन बी गिवन ओनली एंड ओनली बाय अ मैजिस्ट्रेट. नो अदर कोर्ट, नो अदर एओ और ट्रिब्यूनल हैज द राइट टू इंटरफियर. नो अदर कोर्ट हैज द राइट टू इंटरफियर. ओके, ओनली अ magistrate, that also presidency magistrate or magistrate of first class. Okay. The total turnover of Sunshine Limited during the financial year 1920 was 10 crore. It is liable to get its account audited under 44AB of Income Tax Act by 30th September. Obviously 10 crore में tax audit आएगा. However, due to some dispute between directors, process of audit of accounts under 44AB will not be completed by that due date. Directors of the company have approached you to know the consequences of not complying with the provision of 44AB. Which of the following complications or consequences of the said non-compliance? जब भी आप tax audit नहीं करवाते हो, what is the rule? Penalty 0.5% of turnover or 1,50,000, whichever is lower. Let's search. Fees will be charged. देखिए quantum इन्होंने right दिया, but that's not fees, it's penalty. Wrong answer. Penalty may be charged 1,50,000 of 0.5%, whichever is lower. Apparently this is the right answer. Fees at the option, not at all please, not at all, and this also not at all, but 0.5% or 1,50,000, whichever is lower. Question 26. Mr. Ram, a resident individual age 55 years, has not furnished his return of income for AY 1920. However, the total income assessed in respect of such year under section 144, return नहीं फाइल करेगा तो 144 होगा, 12 lakh rupees. Determine the penalty leviable under section 270
A. What is going to be the penalty? That means again I think they have given you, last time also it was 12 lakh, this time also it is 12. So same answer, no? Illa chetta, no, this is for south students, nahi, and north ke liye nahi. And therefore this time the change will be, ये जो आपने 1,10,500 लिखा है ना, that will change to 1,10,000 लिखा है ना, that will change to 112 accordingly. ये सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, because this time he is, question number क्या है बे, 26, because this time he is not a senior citizen, तो 250 basic exemption, and therefore 172,500 plus 4% जब हम करेंगे we get 179,400, and इसका half, that is 89,700. So penalty 179,400 wrong, penalty 89,700 यही right है, 53,300 nonsense, wrong, ये ही आपका right answer है, खाली age की वजह से amount change. Private bank has not filed statement of financial transaction or reportable account soft in respect of specified transactions on 1920, तो 500 रुपया पर डे लगेगा. Notice was issued on 1st October, तो भी 500 ही लगेगा. After notice also 500 by 31st October, and bank furnished on 15th November. तो प्लीज इस बात को समझ लीजिए, till 31st October it is going to be 500 rupees per day, and 1st November to 15th November ये तो 15 दिन का 15,000, 1,000 rupees per day, 1,000 rupees per day. आफ्टर यू गेट नोटिस वो 500 रहता है, नोटिस खत्म होने के बाद में 500 की जगह पे 1,000. सो ये तो 15 दिन है, ये तो 15,000 मिल गया. जस्ट 1 जून से लगाकर 31 अक्टूबर कितना डेज होता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. दैट्स आई थिंक 3, 6, 9, 12, 15, 153 इंटू 500 रुपीज एंड प्लस वो 15 दिन का 15,000, that is 91,500. Answer to 27 will be A. Question number 28. Dinesh, a resident individual of 47 years, has not furnished his return of income for AY 2021. However, his total income for such year assessed, obviously again 144 hoga, is 18 lakh rupees. Is penalty attracted? And if so, what is the quantum of penalty? What will be the quantum of penalty? Now see, this is 18 lakh rupees. तो ज्यादा चेंज नहीं होगा, माइनर चेंज होगा. क्वेश्चन नंबर 28, एंड ही इज 47 इयर्स, तो 8 लाख इंटू 30%, आई थिंक दैट्स 2,40,000, एंड देन 10 लाख तक यू गेट 1,12,000. 10 लाख तक तो 1,12,500 ही होएगा ना, बिकॉज इज 47 इयर्स. सो 2,40,000 प्लस 1,12,500 प्लस 4%, 366,600 तो टैक्स है, वो टैक्स है. और हमको क्या पूछा है? पेनल्टी. 366,600 डिवाइड बाई 2, 183,300. 183,300. Understood? And we now come to question number 29. Please listen to me carefully. Recently, Institute has announced that हम लोग case study based MCQ पूछेंगे. So we will give you one story, and on the story we will ask 5 questions. ऐसा एक हमारे business plus के चैप्टर में था. And this is also that 29, it is not 29, it is 29, 1, 2, 3, 4, 5 questions. So effectively you can say penalties chapter में we are doing 28 plus 5 total 33 questions. क्योंकि 29 के अंदर ही 5 क्वेश्चन है. We are doing it that way. This is a case study based MCQ question. Institute in their database, in their RTP till now have given only 2, and both are incorporated in our book. And I have told you पहले भी, मैं एक बार वापस बोलता हूं, I will say it again. There is not a single ICAI MCQ which is not covered. ICAI का एक भी MCQ covered नहीं है. And इसलिए अगर आपको ये वाले मेरे जो, I have told you that about 15 to 20 lectures में I will finish all 1600. अगर आपको ये 1600 MCQ याद है, I'm telling you, minimum 25 actually मैं हर जगह लिखता हूं. It is quite possible to score 30 out of 30 also. मजाक नहीं कर रहा हूं. चलिए देखते हैं केस स्टडी बेस्ड MCQ कैसे पूछा है. MNO is a firm liable to tax at 30%. Following are the particulars furnished by the firm for the assessment year 2021. As per the return of income 139 के अंदर जो फाइल किया 40 lakhs,
एज डिटरमाइन अंडर 143 150 lakhs, तो ये तो सबसे इररिलेवेंट होगा। रिमेंबर, फॉर पेनल्टी पर्पस return is never relevant, it is always going to be, your assessment will always be compared with your intimation and your reassessment will be compared with your assessment. If there is a difference here, there will be penalty. If there is a difference here, there will be penalty. On this gap of 15 lakhs, there will be penalty. On this gap of 20 lakh, there will be penalty. The difference between return and intimation is because of errors, and for that there is not going to be any penalty. Okay, so 50, 65, 85 हमको दिया है. Further, Mr. N is a resident individual of age of 58 years and a partner of the firm. So he is a partner over here. Okay. And has not furnished his return of income for AY 2021. However, his total income assessed in respect of such year is 15 lakh rupees. So basically, firm ka there will be one penalty, two penalty, and partner के लिए for not filing ROI there will be one penalty. Total 3 penalty आपको आएगा, 2 firm के ऊपर, एक पार्टनर के ऊपर. पार्टनर इज हैविंग इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बट ही हैज नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न. चलिए, लेट अस सी नाउ द 5 क्वेश्चंस. दैट ये स्टोरी था, इस स्टोरी के ऊपर दे हैव आस्क्ड 5 क्वेश्चंस. ये है आपका पहला क्वेश्चन, और ये जो 1 2 3 दिया है ना, ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन इधर है, ऑप्शन इधर है. क्वेश्चन को रीड करेंगे प्लीज. MNO is deemed to have under reported its income since income determined under section 143(1) that is intimation exceeds the income as per return. रिटर्न से कोई मतलब नहीं है, रिटर्न कंटेन्स एरर्स, इंटीमेशन विल करेक्ट दोज एरर्स, इसलिए रिटर्न से कोई मतलब नहीं है. दैट कैन नॉट बी दिस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन दोनों का डिफरेंस कैन नॉट बी अ फैक्टर फॉर पेनल्टी. फैक्टर इन दोनों का डिफरेंस नहीं हो सकता है, इट विल ओनली बी दिस एंड दिस. रॉन्ग. इनकम असेस्ड अंडर 143(3) एक्सीड्स द इनकम, यस दिस डिफरेंस करेक्ट ऑप्शन है. Income assessed under 147 that is reassessment is more than this, yes, that means 2 and 3 both are right. 2 and 3 कहां पे है, यहां पे है. This is how you will answer. चलिए, second question. Mr. N मतलब अभी ये पार्टनर की बात कर रहा है, is deemed to have under reported his income since he is a partner of a firm in which has under report. To hell with it, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं. मिस्टर एन का क्या क्राइटेरिया है, इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, और उसने रिटर्न फाइल नहीं किया. फर्म ने क्या किया, उससे मी एज अ सेपरेट असेसी विल नॉट गेट अफेक्टेड. सो ही हैज नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न, दैट्स राइट. एंड असेस्ड इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, दैट्स राइट. सो अगेन यू हैव टू सर्च फॉर 2 and 3 which is your option C. Question number 3 please. Assuming that under reporting of income is not misreporting. Not misreporting means 50%, क्योंकि misreporting होता है तो 200% होता है. And none of the addition or disallowance qualifies under 270A subsection 6. What is going to be the penalty at the time of assessment? Means they are asking you, जब ये 50 से 65 बना उस टाइम पे क्या पेनल्टी लगेगा. What is going to be the penalty at that time? At that time, और उसके लिए it is not misreporting, तो 50% लगेगा. But how will we calculate? This is question number 29 का कौन सा पार्ट है, ये पार्ट 3 है ना. चलिए, what is the underreported income? First of all you have to compute underreported income. Underreported income कितना होगा, assessment के टाइम पे it is 15 lakh rupees. How will you calculate the underreported tax? कैसे करेंगे, tax on 65 lakhs and tax on 50 lakhs का difference we have to find out. Tax on 65 lakh minus tax on 50 lakh rupees. So 65 lakh का 30% फ्लैट, सरचार्ज नहीं आएगा, नहीं आएगा. फॉर फर्म सरचार्ज विल कम आफ्टर 1 crore. सो प्लस 4%, 20 lakh 28,000. एंड यहां पे आपको 50 lakhs के ऊपर मिलेगा प्लस 4%, दैट्स 15 lakh 60,000. सो अंडर रिपोर्टेड टैक्स 468, एंड ये अंडर रिपोर्टिंग है इसलिए डिवाइड बाय 2 दैट इज 50% होगा, और 234 आपका आंसर होगा. अगर ये मिस रिपोर्टिंग होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 होता. अंडर रिपोर्टिंग है इसलिए बस अब आपको 234 ढूंढना है. वेयर इज 234? यार देखो, ऑप्शन भी बहुत केयरफुली फाइंड आउट करके आपको दिया है. चलिए, assuming that under reporting of income is on account of misreporting, जैसे misreporting हुआ means can I say this time it will be double 200%. What is the penalty leviable on the firm at the time of reassessment? That means अब आपसे पूछ रहा है when 60 became 85,
व्हाट विल बी द पेनल्टी? इस बार आप मिस रिपोर्टिंग का करोगे, दैट मींस सिस्टम वही रहने वाला है. फर्स्ट वी विल हैव टू कैलकुलेट अंडर रिपोर्टेड इनकम. 65 has become 85. That means can I say 85 minus 65? 20 lakh rupees. Then we will calculate under reported tax. 85 lakh के ऊपर क्या टैक्स आ रहा है? 30%. अगेन सरचार्ज नहीं आएगा, 1 करोड़ तक नहीं आता है, जस्ट 4%. 26,52,000 एंड माइनस ये तो 2028 ऊपर ऑलरेडी करके रखा है, 6,24,000. और इस बार मिस रिपोर्टिंग है तो इंटू 200% में 12,48,000. 12,48,000 विल बी योर आंसर. मिस रिपोर्टिंग में इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज 12,48,000. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. In question 29, assuming that the under reporting of income is not on account of misreporting, that means 50%, the under reported income of Mr. N and the penalty leviable will be what? Mr. N का income कितना है? 15 lakh. 15 lakh. ये वो only place जहां पर 270A penalty में students go wrong. This is his income. He has not shown anything. Because he has not shown anything, your mind will say 15 lakh unreported income है. 15 लाख मोदी जी, 15 लाख मीन्स मोदी जी ना, 15 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम है. Absolutely wrong, absolutely incorrect. For this case, and this is the only case where you can go wrong, here the underreported income will be 15 minus your basic exemption of 250. Accordingly, 1250 will be your answer. This is one place where a lot of students can go wrong. So this and this, sorry, A and C जिधर 15 लाख दिया है वो कैंसिल हो जाएगा. अब आपको बस पेनल्टी फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द टैक्स ऑन 15 लाख रुपीज? फर्स्ट फाइंड आउट द टैक्स ऑन 15 लाख. 5 लाख का 30%, 1,50,000 प्लस 1,12,500 नॉन सीनियर सिटीजन, 262,500 कैलकुलेटर यूज करने का, प्लस 4%, 2,73,000 एंड इसका डिवाइड बाय 2, क्योंकि वो आपको बोल दिया ना नॉट मिस रिपोर्टिंग. 273 का हाफ 136,500. देखिए 136,500 किसमें दिया है? ऑप्शन डी के अंदर दिया है. तो सुनिए स्टूडेंट्स, आपका सबसे बड़ा मिस्टेक जहां पर पॉसिबल था, you would have probably chosen this because your penalty calculation is anyways right. Penalty will be calculated on the total tax of 15 lakh rupees 273. पेनल्टी आपका राइट मिलेगा, पेनल्टी आपका राइट मिलेगा, पेनल्टी आपका कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है, पेनल्टी आपका हमेशा राइट रहेगा. लेकिन अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना काउंट होगा? व्हाट अमाउंट इज गोइंग टू बी काउंटेड एज योर अंडर रिपोर्टेड इनकम? नॉट एंटायर 15 लाख, 15 माइनस बेसिक एग्जेम्पशन. आप रॉन्ग क्या कर सकते हैं? शायद आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं जो आपको लग रहा है दैट राइट है, यू थिंक इट इज राइट, बट देन दैट इज व्हाट डायरेक्ट टैक्स इज ऑल अबाउट. Studying direct tax is like getting married. Every time you think you are right, she will find out some mistake. Who she? ICAI. Every time you think you are right, you are wrong. चलिए इसी के साथ let's go to next chapter, miscellaneous provisions. If a company issuing shares receives an amount of dash in a financial year, the company has to report this transaction. Issue of shares के लिए SOFT एक्चुअली रूल्स में दिया हुआ है, whenever a company is getting 10 लाख रुपीस और मोर, 10 लाख या उससे ज्यादा का शेयर्स इशू होता है तो उसको SOFT में रिपोर्ट करना कंपलसरी हो जाएगा. 10 लाख, कुछ रूल्स है. प्रॉपर्टी के लिए 30 लाख रुपीस है, कैश डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट इट इज 10 लाख रुपीस. क्रेडिट कार्ड पेमेंट के अंदर अगर आप कैश में पे करते हो तो 1 लाख का लिमिट है, चेक से पेमेंट करते हो, NEFT से करते हो तो 10 लाख का लिमिट है. कुछ लिमिट्स है, नॉट इन द एक्ट बट इन द रूल्स, बट दीज क्वेश्चंस विल सर्व एज एन एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री रिवीजन ऑफ that part also. Payment of 1,20,000 made to an institution issuing credit card with respect to credit card issued, whether the company is required to report. मोड नहीं दिया, मोड देना चाहिए क्योंकि कैश में आंसर यस रहता है. Made to institution issuing credit card
इन कैश आप लिख दीजिए प्लीज, इन कैश, दे हैव टू गिव यू द मोड इन कैश, एंड इफ इट इज इन कैश यू हैव टू रिपोर्ट इट. यस. ड्यू डेट ऑफ सबमिटिंग एसओएफटी लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया, 31st of May. Banking company is required to submit SOFT with respect to transaction wherein cash deposit made in the current account. Cash deposit कितना होएगा तो 10 लाख रुपीस और मोर, 10 लाख या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट हुआ तो SOFT में आएगा. इन केस ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म एनी नोटिस विच इज रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड शुड बी सर्व्ड किसको? लिसन, जब तक आपके सारे आउटस्टैंडिंग टैक्स पे नहीं हो जाते, द डिसॉल्व्ड फर्म विल बी डीम्ड टू बी इन एग्जिस्टेंस एंड इन सच केसेस वी कैन फर्निश इट टू एनी पार्टनर एक्सक्लूडिंग minor, or in other words can I say any adult partner? Very good. X Patel NBFC gave a loan for which total repayment is 2,50,000 which is to be made in cash. Each installment is 15,000 rupees. How much penalty for violation of section 269T आएगा? Because loan repayment comes in 269T. 269ST is of not receiving 2 lakh rupees or more in cash. That is a different section. This is 269T. सेक्शन 269 SS नॉट एप्लीकेबल. याद आया? डू यू रिमेंबर? याद आया क्या? फॉर नॉर्थ का स्टूडेंट्स, ईस्ट का एंड वेस्ट का स्टूडेंट्स याद आया क्या? फॉर साउथ का स्टूडेंट्स, स्पेशली माई मलयाली स्टूडेंट्स फ्रॉम केरला, ऑर्मी ओंडो, डू यू रिमेंबर? याद आया क्या? नॉट एप्लीकेबल, तो पेनल्टी लगेगा ही नहीं ना. क्वेश्चन नंबर 7. इनकम एंड टैक्स हैव टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मिड. स्टूपिड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है. इजी भी करेंगे, डिफिकल्ट भी किया ना. पेनल्टीज में कितना क्लोज था आपका आंसर. तो सब टाइप का एमसीक्यू, हमारे एमसीक्यू बुक को अगर आपने कर लिया, मैं इवन नाउ आई विल मेक दिस क्लेम एंड वेरी प्राउडली आई विल मेक दिस क्लेम, दिस इज करंटली द बेस्ट बुक इन द मार्केट इन एमसीक्यूज फॉर सीए फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, एंड the best book is available for you. All questions solved right in front of you. It is all about how much you utilize the benefit. Okay. Till now I believe that obviously those who are aware are watching every day. Lekin they are selfish. They are not telling their friends. And therefore they are watching it because they want to bring the marks alone. But then jaise people will start knowing about it. Obviously in the coming days there will be more and more people watching these lectures. Who cannot be authorized representative? CA holding COP allowed है, employee allowed है, relative allowed है, but friend of assessee not allowed. Penalty for violation of 269 SU. SU क्या है? If your turnover crosses a certain limit last year, then you have to provide specified modes of receiving to your payers. Means in addition with the existing modes, आपको नए modes में which circular में निकाला है, उन्होंने बोला रुपे डेबिट कार्ड एंड UPI ट्रांसफर QR कोड you have to provide. और अगर नहीं किया तो 5,000 रुपीज पर डे. क्वेश्चन नंबर 10. 269 SU shall not cover. रुपे कार्ड कवर किया है इन द सर्कुलर, UPI QR कोड कवर किया. दे आर आस्किंग नॉट कवर्ड. अगर कवर बोला होता ना, कवर, देन बोथ ऑफ देम वुड बी द आंसर. दे आर नॉट आस्किंग कवर्ड, दे आर आस्किंग नॉट कवर्ड. Paytm is not covered. Government cannot recommend a private sector company like that. Okay. Notice can be sent by, or notice cannot be. See, हर एक word if you don't read, you understand how wrong you can go. Post, yes. Electronic mode, yes. अगर आपने can read किया ना, notice can be sent, तो can का आंसर ये है, but the question is cannot be sent. WhatsApp, lol. सुनिए ना, listen no. Recently बोले तो it's like about 10-15 days ago, there has been a Supreme Court judgment under which Supreme Court ने बोला that ये वैसे भी लॉकडाउन एनवायरमेंट एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, तो इसमें गवर्नमेंट को आपको कोई भी नोटिस देना होगा, दे कैन एक्चुअली सेंड इट टू यू ऑन व्हाट्सएप, एंड अगर ब्लू टिक आ गया दैट मींस द नोटिस इज कंसीडर्ड एज डिलीवर्ड टू द एसएससी. सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, बट दैट्स फॉर जनरल रूल्स. स्पेसिफिकली इनकम टैक्स में एज ऑफ नाउ प्रोविजन नहीं आया. अगर प्रोविजन आ जाएगा तो वी कैन मॉडिफाई इट. नेक्स्ट ईयर वी विल बी, ऑब्वियसली द होल बुक विल चेंज. May 21 अटेम्प्ट के लिए बुक पूरा का पूरा चेंज होगा. लेक्चर्स भी पूरे के पूरे नए होंगे. देयर आर मैसिव अमेंडमेंट्स फॉर असेसमेंट ईयर 21-22. यू आर November 20 स्टूडेंट, योर AY इज 2021. मेजर अमेंडमेंट्स आर गोइंग टू टेक प्लेस. सो बेसिकली द हिंदी इंग्लिश वर्जन इज ऑलरेडी recorded. The English version is going to commence very soon, and for which we are having 2 batches in the coming week also. तो obviously सब कुछ जब टाइम आएगा तब चेंज होएगा. As of now cannot be sent by WhatsApp. Notice after total partition of HUF should be sent to. If the HUF is partition, then whom? Karta.
That's right. Karta, but if not alive, any adult member. In HUF, you cannot send to one. In HUF, the rule is it has to be sent to every member. So wrong. All adult member. No. Karta, but if not alive, then all adult members. So first preference will be Karta. If Karta is not alive, then it will be members, but all. If you don't send to one also, अगर एक को भी नहीं भेजा ना, 10 मेंबर है, 9 को भेजा तो 9 की 9 नोटिस इनवैलिड हो जाएगी, because you have to send to all 10 members. Question 13. Notice after dissolution of firm. After dissolution of firm, अभी तो आया. It should be sent to whom? It can be sent to any partner. However, we will not send it to minor. That means you can say adult partner. Liaison office of non-resident should furnish the statement. What is the rule for liaison office of non-resident with respect to activities in India? Within 60 days from the end of the year. Information about assessee can always be given to media, never be given to media, given to media if assessee permits, be given to media only if it is in public, only if it is in public interest. Registered valuer can appear before. Registered valuer means question of fact. So IT authority, yes. ITAT, yes. High Court, Supreme Court, no. No. Why no? Because High Court, Supreme Court only if question of law. And that means this is right, this is right. If both are right, then our answer has to be D. See, two options are right, then answer will be D, no? If today इन दोनों में से कोई एक right होता, तो फिर वो आपका आंसर बन जाता. लेकिन अगर दोनों right है, तो D आपका आंसर बनेगा. Question 17. Mr. X, a CA with a COP, is a manager in ABC Limited. He can he represent the company? Representation work? Yes, even if he is employee. But do tax audit? No, he cannot. So this is not allowed. Do both? Obviously no. Do none? No, because this is allowed. So he can represent the company in tax matter. Question 18. A proprietor wishes to get his tax audit done. He cannot get it done. Cannot. His partner? Yes, partner not allowed. So that's right. His wife? Yes, right. So both A and B is right. His friend? No. And in other words, can I say if this is not correct and A and B both are correct, if A and B both are correct, then answer क्या बनेगा? C. A person disqualified to become tax auditor cannot represent in tax matters also. False. You are disqualified to do certification work, but you can continue to do representation work. Notice will be considered as invalid. आपको पता होना चाहिए कि अगर clerical error होता है, wrong date लिख दिया, wrong time लिख दिया, तो वो valid notice होता है. Invalid will be after due date या sign नहीं किया, which is a principal error. So not signed, yes, it is right. Wrong AY, no. In such case, it cannot be invalid, it will be valid. Wrong date, no, it is valid. After due date, right. All of them, wrong. A and D, yes, they are right. And B and C, wrong. That means B is wrong, C is wrong, this is wrong, this is wrong. A and D is right, then option F will cover A and D both. A and D both will get covered in option F. Followed. Notice will be considered as valid. Valid. Clerical error होगा तो valid. Not signed, ये clerical error नहीं है. Wrong AY, ये clerical error है तो valid. Wrong date, clerical error है valid. So B and C. After due date, ये नहीं है. All of them नहीं हो सकता है. A and D already marked wrong. That means B and C are right. If B and C both are right, then the correct option that you will choose is G. And one thing जो मैं आपको बार बार every lecture में बोल रहा हूं, all options you should read. बिना option read किए आपको कभी नहीं करना चाहिए, because ये possible है that more than one option is right and then a third or fourth option is like both of them या all of them. So till the time you don't read all the options, you cannot decide. Except obviously जैसे एक penalty है तो 25,000 है तो वही right हो सकता है, या 10,000 है तो वही right हो सकता है, तो कोई option नहीं read नहीं करोगे तो भी चलेगा. But when multiple answers can be right, then you have to read all the options. जैसे कि 20 का आंसर F आया and 21 का G आया. Income tax rules are made by, see, a thing like this we don't need to read because we know papa, daddy, father, abba or achan, CBDT. CBDT is the papa. 269 ST. 269 ST means 2 lakh rupees or more if you receive in other than allowed modes.
100% penalty will be applicable. They are asking applicable. If you withdraw from bank, then not applicable. It is given in the exceptions. Any transaction covered under 269 SS, not applicable because already 20,000 limit is there. Purchases from a seller registered in GST, that is irrelevant. That is irrelevant. It is applicable. An award by government, so government is involved, not applicable. The question was applicable. It is applicable. Okay. Provision relating to taxation of indirect transfer of shares of an Indian company were introduced by Finance Act 2012 as an aftermath of the decision of the Apex Court. Indian company having foreign ownership has to give information, no, about change in ownership. Which was that company? Because of the Supreme Court judgment of Vodafone. And question number 25. When a business is succeeded by another person, income from the start of accounting year of succession till the date of succession, from the beginning of the year. So if there is succession in the middle of the year, then from the beginning of the year till the date of succession, this income will be assessed in the hands of the, obviously, the predecessor. It will be assessed in the hands of the predecessor. That was our chapter called miscellaneous provisions. Obviously, we still have a lot of time in today's lecture. अभी देखिए अगला चैप्टर TDS है, and TDS के अंदर I have got 125 questions for TDS में 125 and PGBP में it is more than 300 questions. I have worked really hard. I just pray that my students are able to take the benefit. Not just my students, not just those students who have taken admission with me. Obviously, I have duty towards them, more responsibility towards them because they have trusted me with their career. But then this is in the service of students, and therefore I have kept these lectures 125 questions. अब ऑब्वियसली 125 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में पूरा तो कंप्लीट नहीं होगा. टीडीएस को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे. टुडे वी विल फिनिश एज मच एज वी कैन, एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस, एज आई टोल्ड यू व्हेन आई स्टार्टेड टुडेस क्लास, आई विल फिनिश एज इन एपिसोड 10 विच विल कवर पार्ट 2 ऑफ टीडीएस. इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, एंड आई कैन नॉट वेट फॉर 125 क्वेश्चंस बिकॉज 1 आवर लेक्चर का 1 आवर 15 मिनट 20 मिनट हो गया तो इनफ है, बट आई कैन नॉट टेक 2 आवर लेक्चर, नहीं तो आई नो पीपल विल नॉट वॉच. इसलिए थोड़े क्वेश्चंस मैं आज करूंगा, थोड़े क्वेश्चंस में बाद में करूंगा. लेट्स सी कितना हमारा होता है. ओके, टीडीएस इज वन चैप्टर वेयर यू कैन मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ mistakes because one word if you don't read carefully, there are so many exemptions provided, monetary limit not exceeded, so many reasons where there will be no TDS. You need to know every word of TDS chapter. एक वर्ड भी अगर ऐसा है जो आपको नहीं पता है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा. TDS, if the institute decides, they can make TDS the toughest question for you because एक वर्ड भी अगर आपको नहीं पता है तो आपका मार्क्स कटेगा. एक वर्ड का भी अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो आपका मार्क्स कटेगा. तो देखेंगे टीडीएस. बिफोर दैट, जैसा कि मैंने आपको बोला था, एक जस्ट एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, आई विल जस्ट शो यू दिस दैट फ्रॉम द मंडे 17th of August, from the Monday 17th of August, if you can see the date is written out here, I am starting 2 batches for May 21 and November 21 live on Zoom, live. So right now when you are watching my lectures, आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट विथ मी, तो आपको मेरे से लाइव लेक्चर में क्वेश्चन पूछना है जूम एप्लीकेशन के ऊपर, विच इज अभी सिस्टम है सबके पास आ गया है. 2 बैच शुरू हो रहा है. एक मॉर्निंग में होगा 7 to 10 विच विल बी मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश इफ यू ऑब्जर्व दिस, एंड एक इवनिंग में होगा 6:30 to 9:15 विच विल बी 100% इंग्लिश फॉर साउथ स्टूडेंट्स, 100%. नवंबर 20 के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था बैच रखने के लिए, एग्जिस्टिंग बैचेस खत्म हो गए, एंड विद द ट्रिमेंडस अनसर्टेनिटी ओवर exams as of now does not make sense to keep any batch for the November attempt. So directly हम लोग May 21 का, इनफैक्ट अगर किसी नवंबर बच्चे को ज्वाइन करना भी है तो बेस्ट है बिकॉज इन 2 months का टाइम, सो यू नो सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ के पहले, मींस बिफोर अक्टूबर गेट्स ओवर, अप्रोक्सीमेटली 180 आवर्स लगता है, आई विल बी एबल टू फिनिश. सो इन केस यू हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड विद वॉट एवर कोचिंग यू हैव ऑप्टेड समवेयर एल्स, तो मैं इस बैच के अंदर नवंबर 21 तक के अमेंडमेंट कवर करने वाला हूं बिकॉज फाइनेंस एक्ट 2020 इज ऑलरेडी अनाउंस्ड. सो May 21 एंड नवंबर 21 पोर्शन. तो अगर आप नवंबर 20 के भी बच्चे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है इस बैच में बिकॉज आई एम गोइंग टू बी कवरिंग ऑल द अमेंडमेंट्स. टाइम टेबल इज वेरी इजी. 1 बैच इज मॉर्निंग, अनदर बैच इज इवनिंग. मॉर्निंग इट इज 7 to 10 एंड इवनिंग इट इज 6:30 to 9:15. आई विल बी टेकिंग ओनली मंडे टू सैटरडे. मंडे टू सैटरडे लूंगा
I will not be taking Sunday. One day in a week I will give you an off. Fees will be rupees 10,000 all inclusive GST etc. So we have to bear the GST with back calculation, all that will be included. There may be students who need video backup. Supposingly you are not present during the live lecture, or you have internet issue in the morning or in the evening, and your laptop is not working or something, then I will give you video backup of whatever chapter you have missed. We get a record in Zoom, who has attended, who did not attend, whatever missed lectures, I will give you the video lecture of that chapter. So that fees will be slightly on the higher side, but for those who have any constraint, we have kept some concession out here. You can take 10% off both 10,000 or 14,000, whichever you choose, choice is yours. We'll give you 10% concession, or if you don't want that concession, then we can give you elective paper international tax free of cost. You can choose between 10% or elective paper, whatever you are comfortable. And anybody who is joining in groups of 5 or more, if you join in groups of 5, then I will give you 20% concession. You can, for if you have any further query, if you want any clarification about how we will be doing and everything, then I have given you 2 numbers. You can WhatsApp your queries, or if you want to enroll also, you can contact on these 2 numbers for your enrollment purposes. Apart from the concession that I am already giving you, 10% concession, or in a group 20% concession. But if you have any constraint, then any particular financial constraint or any particular problem, so I always strongly believe that just because of shortage of financial resources, students should not be losing on education. Education is a very, very important factor. It can change lives. So if you have any financial constraint, then you speak with me on these numbers. These numbers are personal numbers only, and therefore your identity will not be leaked or revealed to anybody. अगर आपको कोई भी financial constraint है, for which reason, अगर आपको फीस का कोई भी issue है, आप मेरे से बात करो, personally बात करो, but then please don't misuse the number. This is only for those students जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जिनको कुछ बात करना है. दूसरे किसी पर्पस के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर से कांटेक्ट नहीं करेंगे प्लीज के. सर मेरे को पीडीएफ दे दो, मेरे को ये दे दो, वो दे दो, सर ये और लेक्चर व्हेन इज गोइंग टू बी एपिसोड 10, व्हेन इज, प्लीज डोंट do that on my personal number. This is only for those students जिनका I really want that everybody should get the best education and in a way that they can afford. So if you really have any trouble, I will be there for you. I will always be there to support you. You just talk to me and explain what is your problem. Already I am giving you huge concession, plus if you want further concession, you can talk to me. These are the details. One morning batch, one evening batch. May 21, November 21. Amendments till November 21 will be covered. Then obviously May 20, November 20 attempt will obviously be covered only. So if you have any friends also, you can tell your friends also about that. These were the details of upcoming batches starting on the 17th of August, Monday. One morning, one evening. For now, let us continue. नहीं तो लोग बोलेंगे कि खाली marketing कर. No, let us continue for now. Okay. Marketing नहीं है, because as I said that if there is somebody who really needs education, well, you have this opportunity and this facility. Try to make most of it. Okay. All right. Let's go to the questions of TDS chapter. At least start to kar lete. We know we may not be able to finish the chapter. Question number 1. A cooperative society paid 20,000 interest to its members. TDS required to be deducted under 194A. Whenever one cooperative society pays to another cooperative society, or a cooperative society is paying to its members, वैसे केसेस में TDS डिडक्ट नहीं होगा. करेक्ट. 194 DA, that means payment by life insurance company. Payment of commission, no. Insurance commission, no. LIC maturity proceeds not exempt. That is this payment. Okay. Tax under section 194D. This is insurance commission. Insurance commission shall be deducted only if the insurance commission exceeds rupees. This is not an important section, but there is yes a monetary limit. 15,000 रुपए से अगर क्रॉस किया, then only TDS comes. Otherwise TDS will not come. X incorporation, a non-resident company, paid rupees 21,000 to Tina, a resident, as commission for purpose of soliciting insurance business. That means, can I say this is insurance commission? Insurance commission, TDS will be deducted under which section? देखिए, this 194H is commission, but other than insurance and lottery, because insurance is covered in 194D and lottery is covered in 194G. C तो obviously नहीं है, contractor है, professional fees है. 194D एक ही बचा,
and rate, then obviously if there is only one option left, then that only has to be your option. 194D, cast responsibility on any person to deduct TDS on insurance commission at a rate of, abhi dekha, 10%. Mr. Adinath, a resident, is due to receive 3,25,000 on 31st March 20 on LIC policy taken on 31st March 2012. Can I say this is up to 11/12? Up to 11/12, what was the premium limit? Maximum 20%. 20%. So sum assured is 3 lakh, premium is 55. Is it within 20%? 3 lakh का 20% 60,000 आता है, ये 20 से कम है, and therefore the maturity proceeds will be exempt, and once they are exempt तो TDS काटने का जरूरत नहीं होगा. Exempt income, no TDS. Exempt income, no TDS. Question number 7. Rate of deduction of TDS for payment of LIC maturity proceeds. देखिए पहले 1% होता था, but now it is going to be 5%. So LIC maturity 5%. Wizcraft and company is not required to get its accounts audited in previous year 18-19. That means last year tax audit nahi tha. It made payment of 6 lakh to Thisara Pereira, Sri Lankan cricketer. TDS will be what? Arey listen, last year tax audit is first of all required only in 5 sections. 194 A, C, H, I, J. The most important sections of TDS. Cheech. And that also only individual HUF. So all assessees other than individual HUF if tax audit last year. Only these 5 sections. And this is non-resident का section. Non-resident का तो वैसे भी जितना उसका tax है उतना ही उसका TDS होगा, and therefore 20% because he is foreign national sportsman. Non-resident foreign national sportsman, sports association and entertainer. It is going to be 20% with HEC 20.8. Mr. Dimitri Vegas is rated as world's best DJ. नाम सर्च करना इसका गूगल के ऊपर. World's best DJ came for a concert in India organized by Wingcraft, and he was paid rupees 90 lakhs on 6th July. How much TDS is required to be deducted on the payment made to Dimitri Vegas? Can I say non-resident foreign national entertainer in respect of performances in India? अगर resident होता ना तो ये लगता 10%, लेकिन नॉन रेसिडेंट है तो ये नहीं लगेगा, कॉन्ट्रैक्टर कमीशन नहीं है. 194E 20.8. Last time it was sportsman. This is entertainer. Sports association भी same ही section में. 115 BBA of special rates of tax chapter. Question 10. Under section TDS and under TDS under 194G, that is TDS on payment of commission on sale of lottery tickets, payer should be dash and payee should be dash. देखिए, whenever full tax is not deducted, payee has to be resident. But payer can be any person, resident or non-resident. So any person resident, C में दिया. Who is required to deduct TDS on payment of commission? Partnership firm, yes. Company, yes. Individual HUF जिसको last year tax audit था, आचीज, yes. All of the above. Threshold limit for deduction of TDS of non-resident sports person under section 194E by a resident taxpayer. Resident taxpayer. क्या है threshold limit? Resident taxpayer. What is the threshold limit? Sorry, resident is the payer. My bad. Humble apologies. TDS of non-resident, payer resident है. Sportsman, non-resident sportsman. Section number भी पूछा है. जब भी non-resident को pay करते हैं, that means exact rate of tax, and 194E will cover incomes which are covered under 115 BBA. 115 BBA means no basic exemption limit, no slab rate, no chapter 6A deduction, nothing, and therefore every rupee will be taxable at 20%. There is no monetary threshold prescribed for the same. Question number 13. TDS at dash is attracted on payments by RBI to a bank for tax collection. Whenever RBI is making payment to banks for tax collection, it has been specifically exempt from TDS under 194H. When MTNL or BSNL is paying to PCO franchisee, no TDS, and RBI is paying to bank for tax collection, no TDS. मित्रों, कुछ याद आया? BSNL paid commission of rupees 20,000 to public call office franchisee. Same cheese, no TDS.
No deduction under 194H, that is TDS on commission, is required if the amount of such income does not exceed. डायरेक्ट क्वेश्चन मॉनेटरी लिमिट पे। अगर आपको रेट और मॉनेटरी लिमिट नहीं पता है तो आप कभी भी टीडीएस का आंसर दे ही नहीं पाओगे। एंड इन एमसीक्यूज टीडीएस कैन बी, इन एमसीक्यूज टीडीएस कैन बी द टफेस्ट क्वेश्चन, टफेस्ट। Question 16. State whether true or false in cases of banks where credit of interest is made to provisioning account on daily or monthly basis for the purpose of macro monitoring, so TDS is required to be deducted. False. Macro monitoring is neither credit nor payment, no TDS. 194A puts liability to deduct TDS on interest under section 194A on any person, नहीं, क्योंकि आ चीज है इसलिए everybody will not be covered. Company is yes, right answer. Any person except individual HUF not required to get their accounts audited in the last previous year. This is the most appropriate answer. देखिए कंपनी है लेकिन ये एनी पर्सन के अंदर कंपनी ऑलरेडी कवर हो गया है ना. दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर. हम ये नहीं बोल रहे कि कंपनी रॉन्ग है, but the most appropriate answer is C. Question number 18. Under section 194A, that is TDS on payment of interest, payer should be dash and payee should be dash. पेई तो रेसिडेंट होगा तभी तो, नहीं तो फिर नॉन रेसिडेंट होगा तो 195 में जाएगा. पेई हैज टू बी रेसिडेंट, बट पेयर कौन हो सकता है? पेयर कैन बी एनीबॉडी, एंड दैट मींस कैन आई से एनी पर्सन पेइंग टू अ रेसिडेंट इज कवर्ड इन सी. बैंक ऑफ इंडिया, बैंक पेड 35,000 इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, टाइम मींस FD/RD, टू मिस्टर अन्नू एज 65 इयर्स. व्हाट इज द TDS? 10% नो. बैंक पे करता है तो 10,000 का लिमिट नहीं, अभी 40,000 हो गया है, और अगर 40,000 हो गया है ना, then there will be no TDS. And in fact, Mr. Annu is of 65 years. For senior citizen, the limit is 50,000 rupees. For senior citizen, the limit is 50,000. That means, can I say there will be no TDS? Bank of India Limited bank paid 7,000 interest on time deposit to Mr. Annu age 35 years. 35 है तो 50 का लिमिट नहीं है, पर 40 का है ना. 7,000 is still less than 40, and therefore again there will be no TDS. One reason अगर आपको मिल गया तो काफी है नो TDS बोलने के लिए. रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194A, दैट इज TDS ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? 10%. ये वैसे भी सबसे पॉपुलर रेट ऑफ टैक्स 10% ही है. ABC partnership firm gave interest of 25,000 to each of its partners ABC. TDS required to be deducted whenever interest is paid by firm to partner. In fact 269 SS भी नहीं लगता है, no TDS. Banks paid 15,000 as saving account interest to Mr. Sunny, age 35 years. TDS required to be deducted. पहली बात तो ये 40,000 से कम. दूसरी बात तो सेविंग अकाउंट अगर ये करोड़ रुपया भी होता, सेविंग अकाउंट पे नहीं आता, FD/RD पे आता है. सेविंग अकाउंट देयर इज नो TDS. मिस्टर बाबूलाल, परेश रावल, बाबू भैया, व्हाट अ कैरेक्टर मैन, व्हाट अ कैरेक्टर. मिस्टर बाबूलाल, बट ही इज बाबू राव एक्चुअली. ओके, साउथ के बच्चों को ये सब नहीं समझ में आता है तो मैं उस सब में नहीं जाऊंगा, क्योंकि नॉर्थ के, ईस्ट के, वेस्ट के बच्चे ये सब समझते. साउथ स्टूडेंट्स विल नॉट अंडरस्टैंड देन व्हाट आई एम सेइंग. इसलिए मैं अभी बाबू राव एंड हेरा फेरी एंड बॉलीवुड एंड ऑल दैट मैं वो सब डिस्कशन नहीं करता हूं. और इसीलिए मैं वापस दिखाऊं, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करूं. 2 बैच इसलिए, एक मॉर्निंग का बैच जो हिंदी इंग्लिश मिक्स में होगा जिसके अंदर बॉलीवुड का एग्जाम्पल्स होगा, और एक इवनिंग का बैच which will be 100% English for South. उसमें examples also I will give you from South industry. My examples are also modified according to the audience. Example भी change होता है, खाली translate नहीं करता हूं that हिंदी और English और English और हिंदी. The example will be customized to your needs. That's the ability of good teachers actually. But then let's go ahead. I will not say a lot of good things about myself. I know I am good. Just kidding. नहीं, just kidding नहीं, सच बोल रहा हूं. Okay, Mr. Babulal has taken a loan from a bank of rupees 1,50,000 on 29th March 2019. Okay, Babulal paid 15,000 as interest to the bank, and Babulal is required to get his books of accounts audited in the previous year 18-19. तो TDS, जब भी आप बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट देते हो तो TDS आता ही नहीं है. When payee is bank, there is no TDS. तो फिर whether he is covered in tax audit or no, all that is irrelevant. Question 25. TDS on interest is not required to be deducted under section 194A in the following situations. Interest paid by banking company to individual if amount exceeds 40,000. Required है.
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नॉट रिक्वायर्ड, यहां पे काटना है, नॉट द आंसर। इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू कंपनी इफ द अमाउंट एक्सीड्स 5000, रिक्वायर्ड है। इंटरेस्ट ऑन एफडी मेड इन द नेम ऑफ रजिस्टर जनरल ऑफ कोर्ट, दिस इज द right answer. This answer is based on a case law. A lot of times a case law का judgment is given as MCQ question. एक यूको बैंक करके हमारे TDS के चैप्टर में केस लॉ है, यूको बैंक केस लॉ के लेक्चर में आई हैव अ सेपरेट recorded lecture on case laws also. Case laws, ICDS and RTP has been discussed. तो once again जैसा मैंने पहले भी बोला था, if students give me good response to these MCQ lectures, then I might think about uploading further lectures of amendments, revision, case laws, RTP, और upload करूंगा. But you need to motivate me. No, I try to motivate you as much as I can. I try to do the best I can. But you also need to motivate me. No, come on. I don't have money to bring paid subscribers. If you have been observing recently, there have been so many news reports. Bollywood rapper बादशाह को एक वीडियो पे कुछ 7.2 करोड़ व्यूज मिले थे. For that he paid 75 lakh rupees only to show off, to improve his public image. And in our profession also a lot of people are doing it. I have money, ऐसा नहीं है कि I don't have money, but I don't want to spend it for these purposes. I would rather give fee concession to my students and utilize that money in a more productive manner. But आप मेरे को अच्छा response तो दो. I have been continuously saying that रोज का रोज lecture देखो, but you are not listening. You are waiting. There are so many people who are not watching only. They watch 3-4 lectures. Now they say that, chodo yaar, I will watch it later. So then if you are not motivating me, then what do you expect? It is as simple as that. Keeping this in mind, I am just telling you this much, that you watch the lectures and you motivate me properly. So amendment, revision, case laws, RTP, I'll think about whatever I can upload. By the way, all the people who enroll for our full course video lectures or our live batches or classroom batches, these lectures are given free of cost in any case to those students. The case law and RTP lecture is always given to them. Case law and RTP lecture is always given. So in our case law lecture, we have discussed this, that in the UCO bank judgment, if the FD is in the name of the registrar, then there is no requirement to deduct TDS. So obviously that is the right answer. Amount paid by firm to LLP, TDS is again deductible. Interest paid by partnership firm to Miss Narayan, who is a debtor of 60,000 on 29th March 2020. Partnership firm was not required to get its accounts audited last year. TDS required to be deducted will be what? Listen, whenever you check last year ka audit, it is only for individual HUF. कंपनी फर्म अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, पहली बात. दूसरी बात, ये कोई पार्टनर नहीं है, ये किसी और एग्जेम्पशन में कवर्ड नहीं है, तो टीडीएस आएगा. यू कैन मेक द फर्स्ट मिस्टेक ऑफ डिसाइडिंग टीडीएस विल कम और वोंट कम. अगर आपने वोंट कम बोल के ये चूज कर लिया तो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, बिकॉज दिस टाइम टीडीएस विल कम. एंड सेकंड मिस्टेक, इफ यू डोंट नो द रेट, if you don't know the rate, you will never give the right answer. For 194A, rate of TDS is 10% and accordingly 6,000 is going to be your answer. Question number 27. At least 1 hour 15 minutes हम लोग करेंगे, उसके बाद में we will wind up TDS का. बाकी का questions we will continue in the second part of TDS lecture. Interest on income tax refund received by Cyrus, resident of 12,000 from central government. Interest on income tax refund again एक exception में दिया हुआ है and therefore इसके ऊपर भी TDS नहीं आएगा. 194B TDS on winning from lottery, crossword puzzle, horse races 194 डबल बी में आता है. will be applicable when payer is and payee is dash. ये एक ऐसे, ये दो सेक्शन, कैजुअल विनिंग के दो सेक्शन है, जहां पर पेयर के लिए भी एनी बोला है एंड पेई में भी बोला है. इफ रेसिडेंट 30, इफ नॉन रेसिडेंट 30 प्लस एससी प्लस एचईसी. इन अदर वर्ड्स, कैन आई से हियर आल्सो बोथ रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, दैट मींस एनी पर्सन इज कवर्ड. एंड इन अदर वर्ड्स, दोनों में आपका आंसर एनी पर्सन आएगा. क्वेश्चन नंबर 29. 194C, that is TDS on payment to contractor and subcontractor shall be applicable when the payer is, यहां पर payer any person हो सकता है, लेकिन payee has to be a resident, any person and resident. 29A. Mr. Krishna won prize in a lottery ticket and the prize was a Maruti car of 5 lakh. TDS will be, even if it is in kind, then also 30% और 30% के हिसाब से 150 आता है. You have to first give the money to the company, then company will release your prize. Correct? Question 31. Mr. Om Mathur won 10,000 from KBC. TDS required. 30% no? मारेगा सर पे, भागेगा घर पे. इधर से दिखता, ये वाला हाथ दिखेगा नहीं ना, फ्रेम के बाहर जा रहा है, ये वाला हाथ दिखा. मारेगा सर पे, भागेगा घर पे.
दिस इज वॉट मैटर्स। और मेरे से पढ़े हुए अगर आप बच्चे हो तो ये सब चीज आपके लिए बहुत नॉर्मल बात है। यू हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन द थिंग्स दैट मैटर। क्या? इक्वल टू 10,000 जो है ना, इक्वल टू 10,000, उसके ऊपर टीडीएस नहीं आता है। इट हैज टू बी ग्रेटर देन 10,000, ग्रेटर देन। तीन सेक्शन में इक्वल टू कवर्ड है। 192 ए आरपीएफ 50,000 रुपीज, 194 डी ए लाइफ इंश्योरेंस में 1 लाख रुपीज, एंड 194 आई ए सेल ऑफ प्रॉपर्टी में 50 लाख रुपीज। तीन सेक्शन में इक्वल टू कवर्ड है, ग्रेटर देन है तो ही टीडीएस आएगा अंडर दिस सेक्शन, एंड देयरफॉर नो टीडीएस। यू कुड हैव प्रोबेबली गिवन दिस एज द आंसर, मगर ये रॉन्ग है, रॉन्ग है। ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर। अच्छा, बाय द वे, टैक्स फिर भी भरना पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस नहीं आएगा। नो टीडीएस डज नॉट मीन इट इज एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम मींस नो टीडीएस, बट नो टीडीएस डज नॉट मीन एग्जेम्प्ट इनकम। ये मॉनेटरी लिमिट की वजह से नो टीडीएस आ रहा है। Individual will deduct TDS only if accounts are audited in the preceding previous year, that is business का 1 crore and profession का 50 lakh. This criterion is applicable. कौन से 5 सेक्शन? चीज, ACHIJ, चीज, ACHIJ, A में अप्लाई, C में अप्लाई, H में अप्लाई, all of the above. Question 33. Hira Exports has entered into a contract with a bus company MNS Limited, resident, for providing bus facilities to their staff and paid 1,20,000 for the financial year 1920. What is the TDS? What is the TDS? Can I say payment to transporter? देखिए, अगर ट्रांसपोर्टर पेन और डिक्लेरेशन दे देता है that I have less than 10 carriages, तब तो नो TDS। लेकिन अगर ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया, then there will be TDS। पहले तो वो राउट, तो आप नो TDS का आंसर नहीं चूज कर सकते हो। और अब रेट, विदाउट नोइंग द रेट, मॉनेटरी लिमिट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। एनुअल पेमेंट इज एक्सीडिंग रुपीज 1 lakh। Assessee is not individual HUF, therefore TDS will get attracted at what rate? अगर पेई इंडिविजुअल HUF होता ना तो 1% होता और ये आंसर बनता, बट पेई इज अदर देन इंडिविजुअल HUF, 2% से ये आंसर बन रहा है। टिल द टाइम यू डोंट नो एवरी वर्ड इन TDS चैप्टर, आप एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते हो। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आर यू फॉलोइंग? फॉलोइंग? Question number 34. ABC REIT gave its building on rent to Mr. Q. Total rent will be received from Mr. Q, 2,50,000. What is the TDS required to be deducted whenever REIT earns interest or rent on own property? उसका इनकम एग्जेम्प्ट होता है, और क्योंकि उसका एग्जेम्प्ट होता है तो उसके ऊपर TDS इल्ला, नो TDS। Question number 35. In which of the following situation TDS is not required to be deducted on payment to contractor? Contractor not required पूछा। Payment by individual HUF for personal purpose, yes. C and J दो सेक्शन में पर्सनल TDS नहीं आता है, पर्सनल पर्पस। Single payment up to 30,000, yes. Aggregate up to 1 lakh, yes. If all are yes, then D becomes our answer. जब सब राइट है तो D हमारा आंसर। Question number 36. Rate of TDS under section 194C on payment to contractor would be dash where the payee is individual HUF and dash for other। individual HUF के लिए 1 and other के लिए 2, 1 2 1 2 1 2 1 2। 36 का आंसर सी। मित्रों, समझ में आता है जिंदगी में व्हाट इज हैपनिंग इन योर जिंदगी। क्वेश्चन नंबर 37। सेक्शन 194I is not applicable for some transactions, which are they? रेंट नहीं अप्लाई करेगा। पेमेंट मेड बाय कस्टमर टू CNF करेक्ट है, बिकॉज ये 194C में जाता है। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स आर कवर्ड इन 194C। पेमेंट ऑफ रेंट डज नॉट एक्सीड 240, विच इज द मॉनेटरी लिमिट लेड डाउन। रेमिटेंस ऑफ पैसेंजर सर्विस फी बाय एयरलाइन टू एयरपोर्ट, यस। सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट, जापान एयरलाइंस लिमिटेड एंड सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड। अगेन मैं मेरे केस लॉ के लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करता हूं, एंड दैट अगेन केस लॉ लेक्चर, एज यू आर अवेयर, फुल कोर्स स्टूडेंट्स आर गिवन all those lectures complimentary, and which will also be given to those students who will enroll in the upcoming batches। तो ठीक है, ये तीनों अगर राइट आंसर है तो 194D। ओके। क्वेश्चन नंबर 38। नो डिडक्शन इज रिक्वायर्ड टू मेक अंडर 194I where the amount of such income paid during the year does not exceed। पहले ये लिमिट 180 था, तो शायद आपको अमेंडमेंट नहीं पता है तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अभी ये लिमिट 240 हो गया, 2,40,000। Question 38, 2,40,000। Rate of TDS under section 194 IA sale of property 50 lakhs or more equal to covered 1%, yes or no? 194 IA TDS on payment of immovable property is not applicable to
फ्लैट पे तो लगता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पे भी लगता है, लैंड पे भी लगता है, बट रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर नहीं लगेगा, बिकॉज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो चाहे सेल हो चाहे कंपल्सरी एक्विजिशन हो, बोथ सेक्शंस 194 IA एंड LA आर नॉट एप्लीकेबल। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन एग्जाम्प्ट रहता है, तो LA में नो टीडीएस, बट सेल टैक्सेबल रहता है, तो IA में टीडीएस आता है। सो IA एक्सक्लूड्स ओनली वन एसेट, रूरल एग्रीकल्चरल। क्वेश्चन 41 बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप बहुत बुरी तरह मरेगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आपको लॉ पता है। यू नो द लॉ, स्टिल यू विल एंड अप मेकिंग मिस्टेक। बहुत ध्यान से देखना। अंडर सेक्शन 194 IA, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल, पता है वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। ट्रांसफरर शुड बी डैश एंड ट्रांसफरी शुड बी डैश। हमको ये पता है ना कि बायर जो पैसा दे रहा है वो कोई भी हो सकता है, but seller has to be resident, because if seller is non-resident then 195 will apply. But here they have not asked you payer and payee, please, they have asked you transferer। transferer का मतलब seller है, that means this guy is the buyer, that means ये हमारा पेयर है और ये हमारा पेई है, तो इसको रेसिडेंट होना होगा, ये एनी हो सकता है। तो आपका मोस्ट प्रोबेबल रॉन्ग आंसर, यू माइट एंड अप चूजिंग दिस, बट एक्चुअली डी नहीं, बी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट ब्लैंक का आंसर रेसिडेंट है। ट्रांसफरर मीन सेलर, सेलर मतलब पेई, पेई को रेसिडेंट होना पड़ेगा, पेई नॉन रेसिडेंट होगा तो 195 लगेगा। लेकिन ट्रांसफरी मींस बायर, बायर मतलब पेयर, वो कोई भी हो सकता है। आपका हाई लाइकलीहुड है आप 41 में डी सिलेक्ट करो, जो रॉन्ग है, क्योंकि बी इज द करेक्ट आंसर। पहले रेसिडेंट है पहले वाले ब्रैकेट में, एंड दूसरे में इट विल बी एनी। आर यू फॉलोइंग? दैट वे वेरी इजी, बट एट द सेम टाइम अगर आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो बहुत बुरा हो सकता है आपके साथ में। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 42, टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 IA shall be paid to the central government within IA मींस प्रॉपर्टी वाला, जिस भी मंथ में यह ट्रांसेक्शन होता है उसके एंड ऑफ द मंथ से 30 days, 30 days from the end of the month in which the deduction was made, 30 days from the end of the month in which the deduction was made। कुछ याद आया मित्रों, देवियों एंड सज्जनों, all of you all? We will continue in episode number 10. Thank you very, very much.